नमस्कार स्टूडेंट्स, कैरियर मेकर्स कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम टाइम टू टाइम बेटा आपके लिए वीडियोस लाते रहते हैं और हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो नई नई वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं उन वीडियोस का अलर्ट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बच्चे, आज का जो हमारा सेशन है वो इंग्लिश का सेशन है और इंग्लिश का जो सेशन कराया जा रहा है वो स्वीटी मैडम के द्वारा कराया जाता है, जिसमें ग्रामर और वोकैब जो है मिला जुला एक सेशन रहता है। तो सभी बच्चे बड़ा ध्यान देंगे कि ये वोकैब का सेशन है या ग्रामर का सेशन है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से पढ़ना है और जो भी वोकैब या ग्रामर आपको कराई जा रही है उसको अच्छी तरह से समझना है ताकि एग्जाम के अंदर कोई भी एरर उससे रिलेट आता है तो आप लोगों का गलत ना हो। तो बच्चे चलो सेशन पे चलते हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। Right, and guys, grammar topic which is going on sentence. Classification of sentence. There are two types of sentence. First one, on the basis of meaning or sense, and the second one, on the basis of structure. On the basis of meaning or sense, there are 5 types. The first one, assertive sentence. The first part of assertive is affirmative, that means positive sentence. Second one is negative. Next part is interrogative. There are 2 types. First one, yes no question, and the second one, WH family question. Next one, imperative. Next one, exclamatory. And the last, optative. And here on the basis of structure, there are 3 types. The first one, simple. Second one, compound. And the third one, complex. Written, guys? Write down the first heading, simple sentence. देखो, अब कुछ भी लिखने से पहले ना कुछ एग्जांपल्स देखो। एक सेंटेंस मैंने कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सेकंड मैंने कहा, रमन इज प्लेइंग हॉकी
and Sudha is watching a movie. और एक मैंने सेंटेंस कहा, if it rains I shall not go to office. गाइस अभी एग्जांपल्स मत लिखिएगा, कहीं आप मेरे साथ टेप रहे हो। अभी तक देखो कुछ पॉइंट्स यहाँ क्लियर करने हैं। पहले जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने दिया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हाउ मेनी सेंटेंसेस आर देयर इन द फर्स्ट वन? Honesty is the best policy. How many sentences are there? One. This is honesty is the best policy. अब ये जो स्टेटमेंट है honesty is the best policy, is it dependent or independent? This is independent. अब केस ये कहता है जहां कहीं भी हमारे पास एक सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, उस सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं कि वो सिंपल सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस एग्जांपल देखो, मैंने कहा रमन इज प्लेइंग हॉकी एंड सुधा इज वॉचिंग अ मूवी, हाउ मेनी सेंटेंसेस आर देयर इन द सेकंड वन? Raman is playing hockey and Sudha is watching a movie. देखो अब आप सब बोल रहे हो कि यहाँ दो सेंटेंस हैं, लेकिन बेटे एक चीज ध्यान रखो कि जब भी सेंटेंस एंड होता है या खत्म होता है तो उसके एंड पोजीशन पर या तो हम फुल स्टॉप यूज करते हैं, या तो हम लोग क्वेश्चन मार्क लिखते हैं, या तो हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसमें फुल स्टॉप तो सिर्फ एक ही बार है। अगर ये दो सेंटेंस होते तो यहाँ हॉकी के बाद भी तो फुल स्टॉप होना चाहिए था, जो कि यूज है नहीं। तो फिर यहाँ पर सेंटेंस कितने हैं? सेंटेंस तो एक है। अब आप बोलोगे कि सेंटेंस एक है, तो फिर ये जो हमें दो नजर आ रहे हैं, एक रमन इज प्लेइंग हॉकी और दूसरा हमने यहाँ लिखा सुधा इज वॉचिंग अ मूवी, फिर ये दो क्या है? अब ये कहता है कि ये आपके पास एक क्लॉज है, ये क्लॉज 1 है और ये क्लॉज 2 है। ये चीज समझ में आई? There are only a single sentence but 2 clauses. Got my point? अब देखो, अब थोड़ी देर के लिए मान लो कि मैंने सिर्फ आपको सेंटेंस बोला हो रमन इज प्लेइंग हॉकी, बाद वाला कुछ भी नहीं बोला, एंड सुधा इज वॉचिंग अ मूवी, प्रेजेंट ही नहीं है, सिर्फ मैंने बोला रमन इज प्लेइंग हॉकी। इज इट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? Yes, good. This is independent. And the second one, Sudha is watching a movie. This is the second one. Second one also independent. अब केस यहाँ पर ये कहता है कि भाई जब आपके पास दो या फिर दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं तो इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ये मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगी, डोंट वरी। अभी सिर्फ आप लोगों को ये क्लियर करा रही हूँ कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते क्या हैं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट मैंने कहा इफ इट रेन्स आई शैल नॉट गो टू ऑफिस, हाउ मेनी सेंटेंसेस आर देयर इन द थर्ड वन? ओनली अ सिंगल स्टेटमेंट। और क्लॉज कितने हैं? There are 2 clauses. Good उत्कर्ष। अब दो क्लॉजेज हैं, एक उसने बोला इफ इट रेन्स और एक उसने कहा आई शैल नॉट गो टू ऑफिस। दो क्लॉज हैं ये। अब भाई पहला उसने बोला इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है। अगर मान लो मैंने सिर्फ आपको सेंटेंस इतना बोला इफ इट रेन्स, इज इट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? इज इट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? बेटा ध्यान से सुनो, अगर मैंने कहा इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है, उसके बाद व्हाट?
उसके बाद तो सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ फ्रेज चाहिएगा ना, और फ्रेज अगर कोई भी स्टेटमेंट लेता है तो वो क्या बनता है, दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज। और जो सेकंड है आई शेल नॉट गो टू ऑफिस, अगर हम किसी को नॉर्मल ऐसा बोल देते हैं आई शेल नॉट गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, तो ये कैसा क्लॉज बनता है, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब केस ये कहता है जहां पर आपके पास मिनिमम वन डिपेंडेंट क्लॉज हो और वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। Got the difference between simple, compound and complex sentence? Write down the definition of simple sentence. Write down. In the simple sentence, heading डाल दो simple sentence. उत्कर्ष बेटा ऑफिस जाऊंगा वो इंडिपेंडेंट है, उसने बोला आई शेल नॉट गो टू ऑफिस, ये जनरली आप लोग बोलते हो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं इफ इट रेन्स, भाई यदि बारिश होती है तो उसके बाद क्या, तो इसकी तो डिपेंडेंसी है ना किसी सेकंड क्लॉज पर, और जिसकी डिपेंडेंसी होती है किसी सेकंड क्लॉज पर तो उसी को तो हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। और जिसका अपना खुद का मीनिंग होता है जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता उसे ही हम लोग इंडिपेंडेंट बोलते हैं। गॉट इट? या गुड। Write down this definition of simple sentence. It always consists of, it always consists of at least one, it always consists of only one, not at least, only one independent clause. It always consists of only one independent clause. अब क्लॉज की डेफिनेशन लिखो, CLAUSE जो मैंने यहाँ मार्क किया है, इंडिपेंडेंट क्लॉज 1 और क्लॉज 2। क्लॉज की डेफिनेशन लिखो ताकि ये चीजें क्लियर रहें कि क्लॉज होता क्या है। It is the main part of the sentence. It is the main part of the sentence that has its own, that has its own a subject and a verb, that has its own a subject and a verb. एग्जाम्पल मार्क कर दो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एरो मार्क करके लिख दीजिएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। दैट्स वाई ये एक सिंपल सेंटेंस है।
Written, guys, definition of simple sentence. Write down the second one, compound sentence. एग्जाम्पल भी लिख लिया होगा. Write down the second one, compound sentence. It always consists of. It always consists of two or more than two. Two or more than two. Two or more than two independent clauses. It always consists of two or more than two independent clauses. Example mark kar do second one. Raman is playing hockey and Sudha is watching a movie. Or Raman is playing hockey. This is first independent clause. And the second one, Sudha is watching a movie. This is again independent clause number 2. Next one. If it rains, नहीं, next heading डालो complex sentence. ये तो example है. Complex sentence, example लिख लो पहले, उसके बाद. नेक्स्ट हेडिंग डाल दो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. It always consists of. It always consists of at least one dependent clause. At least one independent clause. At least one dependent clause. And one or more than one independent clauses. And one or more than one independent clauses. I repeat, it always consists of at least one dependent clause. At least one dependent clause. And one or more than one independent clauses. Write down the example, the last one. If it rains, I shall not go to office, and marked if it rains is dependent clause, and the remaining one is independent clause.
बेटा इसके स्ट्रक्चर्स भी हैं। अगर ज्यादा हेक्टिक हो रहा है तो आप लोग बता दो, मैं नहीं कराऊंगी। ऐसा ना हो कि करो भी और वो समझ में ना आए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। डन, चले स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। राइट डाउन स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। Compound sentence in which we have two or more than independent clauses. The first structure, subject, then verb. It may be an object is present here. It may be any conjunction, other words in between both of them. After that, any subject, then any verb, after that object, and the very last full stop. This is subject plus verb plus object, clause 1. And this is subject plus verb plus object. This is clause 2. And both are independent clauses. The second structure, subject. Again, subject is present here. After that, verb. In between, any object, preposition, conjunction, other words. Again, verb, it may be an object, not mandatory, it may be or may not be. And the very last, full stop. Subject, this verb. And this subject is used this verb. That's why this subject and this verb, it may be any object. This is the clause 1. And this subject with this verb and the last object, that makes the second clause. उत्कर्ष बेटा, 3 ही स्ट्रक्चर है सिर्फ कंपाउंड सेंटेंस के। उसकी नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो उसमें हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और बाकी अंतर कंप्लीट कर लेंगे। बस ये 3 स्ट्रक्चर है, ज्यादा कुछ नहीं। See the example. Raju, who is a doctor, live in abroad. This is subject. Who, again this is subject. Is, this is verb. This is other words. Live, again verb. This is again words. Who के according verb is. This is correct. But Raju के according verb which is live. But the nature of Raju is singular. Then the nature of verb have to be singular. But live, this is the first form, and the nature of first form is always
plural. That's why this is wrong. Use your lips. This type of statements begin with compound sentence. Yeah, good. And the third structure, subject plus verb, other words, again verb, it may be other words, and the very last full stop. Subject used to this verb, and this is subject is used to this verb. When it is followed by the first verb, it makes the clause 1, which is independent. And when this subject is followed by the second verb, that makes the another clause. This is clause 2. How's that? See the example. They come here and teaches us very well. In that case, they is the subject, come is the verb, here and this is other words, teaches again verb, this is again object and other words. They के according come and according to they, this is teaches. The nature of they is plural. लेकिन teaches नहीं होगा कि teach होगा. Yes, teach होगा, teaches नहीं होगा. Because the nature of they is plural and come, this is the first form of the verb which is always plural, but teaches. This is the fifth form which is SODS nature. This is singular nature. That's why this is wrong. Use a teach. Because the first form of the verb is always plural. Okay, Neeraj, I will. He comes to meet me and bring a lot of sweets for me. Check it. Both Rohit and Mohit who are artists has taken part in this competition. Check both statements. He, this is subject. Comes, this is verb. Other objects, words. Bring again verb. A lot of sweets for me. This is again object and words. Here both Rohit and Mohit. This is subject. Who again subject. Are is the verb. Artist. This is other words. Has again verb. Taken main verb. Other words. These are. And in the first one, Nitin,
Bring is wrong here. Use brings because the nature of the subject is singular. नहीं बचा. A lot of is equal to lots of. But we never use a lots of. This is wrong. Done. Structure of compound statements. Any doubt in it? Okay, guys, remaining portion we will discuss in the next session. Class is over. Take care and good luck.